Oxidation number, basically, I am telling in short about what is oxidation and reduction. We are starting with the chapter redox reactions. And what is the meaning of a redox reaction? A redox reaction is the one in which both oxidation and reduction takes place simultaneously. Board is clear to all of you? Board is visible? No, sorry, मैंने से point ही नहीं किया. Okay. I am doing the recording also. Okay, so we are going to start with the chapter redox reaction. Okay, redox reaction means both oxidation and reduction takes place simultaneously. So what is oxidation in short? Who can tell me what is oxidation? What is oxidation in general? The addition of oxygen And to the reduction of substance. hydrogen and addition of O2. Yes, oxidation means addition of oxygen, removal of hydrogen, and there is one more definition of oxidation. Ma'am, loss of electrons. Yes. Oxidation also means loss of electrons. And now again the definition is increase in oxidation number. Oxidation also means increase in oxidation number. So we can use this definition for oxidation also. Oxidation means increase in oxidation number. Okay? And what is the meaning of reduction? It means decrease in oxidation number. So I am just telling you in the terms of oxidation number. Other points Aishwarya ma'am will cover. Okay, so I am starting basically with the topic oxidation number. So oxidation means increase in oxidation number and reduction means decrease in oxidation number. Now, what is the meaning of the oxidation number? What is the meaning of oxidation number? Yes, anyone can tell me what is the meaning of the oxidation number? Ma'am, oxidation number means it is the oxidation state of an element in a compound assigned according to a set of rules consisting the electrons in covalent bond belongs to more electron negativity. Aryan, you are speaking now? Yes, ma'am. हाँ, खुशी मैं वॉइस रिकॉग्नाइज कर रही थी. ओके आर्यन, ये तो आपने पूरी डेफिनेशन बता दी एज सच फ्रॉम एनसीईआरटी व्हाटएवर आई टोल्ड यू. It's simply because oxidation number means oxidation state. Oxidation number means oxidation state. And oxidation number concept is valid in the case of a covalent compound. Okay, oxidation number means oxidation state in a covalent compound. Now there are certain rules. यहाँ से मैं आपको करा रही हूँ. There are certain rules for finding the oxidation number. Okay, all this topic Aishwarya ma'am will take it. So I am taking from whatever is relevant for today's topic. That is oxidation number. Is it okay? Now oxidation number means there are certain rules. Rules for finding oxidation number. The first rule we are taking in the case of an element. What is the meaning of an element? Element means same type of atoms. Element consists of same type of atom. Element means consisting of same type of atoms. इसमें कोई और atom नहीं होना चाहिए. Same type of atom. So for an element, oxidation number is always equal to 0.
So if I am giving is copper, O2, N2, they are not consisting of any other atom, iron, aluminium, TK sulfur. What is the oxidation number? For all these, the oxidation number is equal to 0 because all these are elements in their stable state. I said, means it consists of only sulfur atoms. So for an element which consists of same type of atoms, the oxidation number is 0. Is the point clear to all of you? Or any doubt? 11th B particularly and 11th A also. For an element, the oxidation number is 0. No, yes, no, no. Yes, ma'am. It's Yes, clear. ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखनी है तो आपका बहुत इजी हो जाएगा. चैप्टर बहुत इजियर चैप्टर है. Now second point. Good morning, ma'am. Yes, good morning. If I am taking the case of a hydrogen oxidation number can either be +1 or -1. +1 कब होता है? With non-metals. ठीक है? With non-metals, the oxidation number of hydrogen is +1. And with metals, It will be -1. it is -1. Okay. Now I am asking the question from someone. They have to answer. Just wait, let me see the names and the attendance. Okay, Anaka, you only tell me if एक मिनट मैं 2-3 बच्चों के नाम देख लूं क्योंकि joint class है. Okay, Anaka, if I am taking is this compound, if I am taking is ANH3, what should be the oxidation number of hydrogen, plus or minus? -1. -1. Why? Because aluminium is a metal. Aluminium is a metal. So for hydrogen, the oxidation number of hydrogen, I am telling only the oxidation number of hydrogen, it is -1. Okay. Now, if I am taking the next compound, Aisha, if I am taking CH4, what will be the oxidation number of hydrogen? Ma'am, it will be +1 because carbon is a non-metal. Carbon is a non-metal. Okay. Now, if I am taking in this compound, suppose platinum, calcium hydride. Devansh, what is the oxidation number? एक single atom का होता है. Oxidation number is of a single atom. So let me circle hydrogen only. Okay. Now calcium hydride. What will be the oxidation number of hydrogen? Devansh, Parthi. Yes or no? Are you present? Yes, ma'am, I am, but I don't know. Tell me what is the oxidation number of calcium hydrogen here? Ma'am, I don't know because I didn't actually take the classes. Metal or a non-metal, Devansh? What, ma'am? Calcium is a metal or a non-metal? Ma'am, metal. So hydrogen का क्या होगा? Plus or -1? Ma'am, it will be +1. मैंने आपको क्या point लिखवाया था? Have you noted the point? I'm actually not because I was absent those days. ये तो मैंने आज से चैप्टर फ्रेश स्टार्ट कराया ना. अभी तो पॉइंट बताया. I just wrote it on the blackboard now only. Okay, I am repeating again for you, Devansh, especially for you, and I hope कि क्योंकि मैम आपके लिए पॉइंट रिपीट करिए, अब सीरियसली पढ़ोगे. फ्रेश चैप्टर स्टार्ट हुआ है देवांश. पुराना भी भूल जाओ जो नहीं आता. Start with this topic only. ठीक है. I have told you whenever hydrogen is combining with a metal, the oxidation number of hydrogen is -1. So in this case, calcium is again a metal. So the oxidation number of hydrogen will be -1. Is the point clear, Devansh? Ma'am, so in every case,
just a metal, then we just have the oxidation number as -1. Combining with the metal, its oxidation number is -1. Okay. Okay. Now, if I am taking this compound, Ma'am, hydrogen react with metalloid. So what is the oxidation number? pardon, hydrogen base. Okay. Chlorine. This is what you are saying. Now, what about the chlorine? Is it a metal or a non-metal? Non-metal. Non-metal. Devansh, what will be the oxidation number of hydrogen? Chlorine is a non-metal. So hydrogen is combining with a non-metal. So when it combines with non-metal, what does it combine with? Plus one or minus one? Just tell. Plus one. Plus. Okay. In the case of hydrogen, if hydrogen is combining with a metal, it's -1. If it is combining with a non-metal, it is +1. Is it okay? Now, ma'am, what will be the case with metalloid? Metalloids are basically taken as metals. It depends. Okay, ma'am. ठीक है, इनको जनरली मेटल्स ही कंसिडर करते हैं. जब केस आएगा ये टेक जैसे मेटलॉइड में आपका टीन होते हैं. टीन बेसिकली आपका सारे मेटलॉइड्स को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं करते. टीन को हम मेटलॉइड भी कंसिडर करते हैं. इट इज अ मेटल ओनली. ठीक है, तो इसका होगा +4, इसका होगा +4, इसका होगा -1. हाइड्रोजन का होगा -1. ठीक है, इट इज अ मेटलॉइड. कोई भी अगर मैं मेटलॉइड के साथ कंसीडर करूंगी तो हाइड्रोजन का इट विल बी जस्ट लाइक मेटल. ओके, नाउ इफ आई एम टेकिंग सपोज दिस कंपाउंड, आगे करते हैं नेक्स्ट. फिर बीच में ले लूंगी एग्जांपल. थर्ड पॉइंट फॉर alkali, first point I told you the oxidation number of an element is 0. Second point, hydrogen. Third point, in the case of alkali metals means I am writing very short. Alkali metals means group 1. Group 1 में आपका आ जाता है सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. Oxidation number is always +1. For alkali metals, oxidation number is +1. Alkaline earth metals. Alkaline earth metals means group 2 elements, that is beryllium, magnesium, calcium, etc. The oxidation number is +2. So for alkali metals, the oxidation number is always +1. Okay, always, without any exception. बाकियों में exception हो सकती है, but for alkali metals, the oxidation number is always +1. Alkaline earth metals, the oxidation number is +2 always. Is it okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now the another point. If I am taking the oxidation number of fluorine, if I am taking the oxidation number of fluorine, जिनका हमेशा फिक्स होता है, it is always -1 without any exception. Fluorine is the most electronegative element. Oxidation number of fluorine is always -1. Oxidation number of fluorine is always -1. Alkali and alkaline metals fixed, fluorine ka always -1. Okay. Now regarding oxygen. Now we are going to do the oxidation number of oxygen. Okay. Now can you tell me what is the oxidation number of hydrogen in water? आपको oxygen का निकालना है. But can you tell me what is the oxidation number of hydrogen in water? +1. +1. What is oxygen? Non-metal. Non-metal. Non-metal का हमेशा माइनस में होगा, तो हाइड्रोजन का क्या होगा? +1. ठीक है. अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज फॉर अ सिंगल एटम. तो एक हाइड्रोजन का +1 है. तो व्हाट अबाउट द ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2. -2. अच्छा, इसका एक तरीका भी होता है, एक हाइड्रोजन का है +1, ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज फॉर अ सिंगल एटम, तो दो हाइड्रोजन का कितना हो गया +1 × 2 दैट इज +2, और ऑक्सीजन का कितना हो गया -2. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, आप ma'am. क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, हाइड्रोजन का अगर हो गया +1, ऑक्सीजन का अगर -2, फॉर्मूला क्या होता है H2O, वी डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? Zero और charge. फर्दर बताओगे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है -2. I am finding the oxidation number of oxygen. Okay. Now take, if I am taking this compound Na2O. Na2O. What is sodium? Group 1 or group 2? Alkali metal. Group 1. Sodium is the alkali metal. और alkali metal का हमेशा क्या होता है? I told you it's fixed. +1. +1. It is +1. ठीक है? अच्छा, इसका एक तरीका भी होता है ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने का, जैसे Na2O है, हमें ऑक्सीजन का निकालना, तो 2 into the oxidation number of sodium प्लस ऑक्सीजन का मैंने ले लिया x is equal to 0. देखिए मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है ना, Na2O means 2 into सोडियम का हो गया +1 प्लस ऑक्सीजन का मैंने क्या ले लिया x is equal to 0, तो what is equal to x -2, तो ऑक्सीजन का हो गया -2. yes or no? Yes, ma'am. Ma'am, your video is not visible. Ma'am, your busy. Ma'am, your video is off. One minute. ठीक है, तो Na2O में ऑक्सीजन का कितना हो गया -2. Now if Yes, I am ma'am. taking the case of Na2O2. Na2O2 मैम 1 आएगा मैम, peroxide है ना. पेरोक्साइड है. ओके, बाकी स्टूडेंट्स के लिए आई एम एक्सप्लेनिंग फॉर अदर स्टूडेंट्स. सोडियम का फिक्स्ड है, सोडियम तो एल्कली मेटल है ना, एल्कली मेटल का क्या होगा +1. तो अगर एक सोडियम का है +1, तो ऑक्सीजन का कितना होगा 2 into +1 प्लस 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑफ अ सिंगल आइटम. ऑक्सीजन का हमें कैलकुलेट करना है, आई एम टेकिंग द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एज x, तो 2 into सोडियम का हो गया +1 प्लस 2 ऑक्सीजन into x is equal to 0, क्योंकि मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, is equal to 0. So it means 2x is equal to -2. 2x is equal to -2. So what is x? -1. So oxidation number of one oxygen will be -1. And what is this called as? What is this called as when the oxidation number of oxygen is -1? This is called as peroxides. Peroxides का मतलब होता है कि peroxide means O2 -, or in peroxide the oxidation number of a single oxygen is equal to -1. This type of molecules where there are 2 oxygen atoms and together the charge on 2 oxygen is -2. So 2 oxygen के ऊपर -2 हुआ तो 1 oxygen के ऊपर हो गया -1. So they are called as peroxides. So it means that the oxidation number of oxygen can vary. In the case of oxygen, the oxidation number can be -2. It can be -1. Yes or no? -1 किस में होता है? Peroxides में. In the case of peroxides, the oxidation number of oxygen is -1. Any doubt till here? Please tell me. Please explain the last case. Peroxide. Peroxide. Okay. See again, I have taken one example. I am taking one more example. If I am taking is H2O. Okay. Hydrogen is combining with a non-metal. What will be the oxidation number of hydrogen? +1. +1. क्योंकि non-metals means non-metal का negative होता है. Non-metals are those which gain electrons. Non-metals which gain electrons means उनके ऊपर negative charge आएगा, तो हाइड्रोजन के ऊपर हो गया +1. तो एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 है, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना हो गया -1. Yes or no? Yes, ma'am. तो जब ऑक्सीजन Yes, ma'am. चार्ज होते हैं -1, they are called as peroxide.
तो अगर मैं H2O2 को लूंगी तो it contains O2 minus 2 ऑक्सीजन एड पेरोक्साइड लिंकेज के ये स्ट्रक्चर तो 2 ऑक्सीजन होती है और both of them are having a minus charge. This is called a peroxide bond. So it consists of 2 oxygen atoms and both the oxygen atoms are having a -1 charge. तो एक ऑक्सीजन के ऊपर -1 है, दूसरे के ऊपर -1 है, together दोनों ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना हो गया 2 माइनस. So in the case of peroxide, oxidation number of oxygen is -1. Is it okay? How to identify a peroxide? It is containing O2 2 minus. There are always 2 oxygen atoms together having a 2 negative charge. So these are called as peroxide. This is a very important point. Is it okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Now ma'am. the next point is superoxides. Oxygen पे केस करें. Next type is superoxides. What we are doing is the oxidation number of oxygen. In the case of superoxides. Now superoxides are a special type of compounds which contains O2 minus. जैसे peroxide में बताया था. In the case of peroxide कौन सी लिंकेज होती है? O2 2 minus. Peroxides means O2 2 minus. Superoxides means O2 minus. Now suppose I am taking is the case of KO2. What will be the oxidation number of potassium? Underline oxygen का निकालना है. 1 1 1 Potassium is an alkali metal. +1. ठीक है ना? Alkali metal के अंदर पोटेशियम का तो हो गया +1. तो एक अगर पोटेशियम का +1 हो तो O2 माइनस में कितना हो गया -1. -1. आपको किसका निकालना है? ऑक्सीजन का. ठीक है, तो पोटेशियम का हो गया 1 + 2. एक ऑक्सीजन का हो गया -x ले लिया इज इक्वल टू 0. यस और नो? दिस इज हाउ ऑक्सीडेशन नंबर. पोटेशियम का हो गया +1/2. +1. हाँ मैं वो बता रही हूँ. एक मिनट जस्ट वेट. पोटेशियम का हो गया +1. देयर आर 2 ऑक्सीजन एटम्स. एक ऑक्सीजन का हो गया x. इसका निकालना होता है उसको मैं x ले लेती हूँ. ओवरऑल कोई भी चार्ज इक्वल टू 0. So what is equal to 2x is equal to -1, which means x is equal to -1/2. So in superoxides, now in superoxides, oxidation number of oxygen is equal to -1/2. Yes or no? In superoxide, Yes, ma'am. the number of oxygen is equal to -half. Clear? Okay. Now I am giving this in the form of a question. Oxygen का थोड़ा सा tricky case होता है, तो this I am taking in the form of a questions now. Should I rub the blackboard? Yes, ma'am. We have to calculate that of oxygen only. And I will be asking you only. Question is find oxidation number of oxygen in. First one. Keep in mind कि fluorine का always -1. Fluorine always -1. Alkali metals +1. Alkaline means group 2 elements +2. This is always. इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा.
Okay. Now the first case, who is going to tell me? First one. मैम मैं है Yes. ऑक्सीजन का मैम first, ऑक्सीजन -2 एंड मैग्नीशियम +2 मैग्नीशियम का कितना होगा? पहले मैग्नीशियम को बताओ, then we can calculate for oxygen. मैम +2 +2. So what about the oxygen? -2 -2. ठीक है ना? We are calculating the charge of oxygen on the basis of other elements. Okay. Now what about the second case, CO2? मैम कैल्शियम की 4 होगी. Carbon, it's not carbon. Ma'am, it is +1. सॉरी मैम, मैम कार्बन की कार्बन 4 होगी. एंड तो मैम ऑक्सीजन Oxygen it is -1. -half. Carbon का +4, oxygen का -2. Generally, oxygen का होता है -2. Generally, oxygen का oxidation number होता है -2 in the case of peroxides. अच्छा, peroxides कौन बनाते हैं? ये आपको बता दूंगी तो इजी हो जाएगा. Peroxides and superoxides. These are generally formed by alkali metals. Generally by alkali metals. Generally, not always. Generally by alkali metals. यहाँ पर तो कार्बन तो नॉन मेटल है. नॉन मेटल्स दे डू नॉट, मतलब ये कार्बन डज नॉट फॉर्म पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड. ये नहीं कि 2 ऑक्सीजन देख लिया तो पेरोक्साइड लगे, नो. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का नाम क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड. यानी इसमें सिंपल ऑक्सीजन है. हम क्या इसको कार्बन पेरोक्साइड बोलते हैं? नो, आई एम सेइंग इट इज कार्बन डाइऑक्साइड. जैसे वाटर होता है या H2O2 होता है. H2O2 इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड. यहाँ पे तो मैं इसको पेरोक्साइड बोल रही हूँ ना, बट यहाँ पे तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोल रही हूँ. इट मीन सिंपल ऑक्सीजन है. व्हाट अबाउट K2O2? मैम में आए. ओके. मैम पेरोक्साइड है मैम, हाफ होगा ऑक्सीजन का, मतलब 1 होगा, -1. मेरे को पोटेशियम मैम पोटेशियम का 1 है, +1. प्लस पोटेशियम का हो गया +1. ठीक है. 2 पोटेशियम है, 2 का हो गया +1 +2. एक ऑक्सीजन का हो गया x इज इक्वल टू 0. मैं फॉर्मूला यूज करके निकाल रही हूँ. मैं डायरेक्ट भी निकाल सकती हूँ, बट आई एम यूजिंग द फॉर्मूला. 2 इंटू पोटेशियम का हो गया +1 +2. ऑक्सीजन का निकालना है मैंने, x ले लिया इज इक्वल टू 0. तो 2x is equal to -2. What is x? -1. Yes or no? So एक oxygen -1. Oxidation number is for a single atom. The oxidation number of one oxygen atom is -1. Next करो OF2. किसका फिक्स है? मैम फ्लोरीन का -1 होगा. -1. What about the oxidation number of oxygen? मैम मैम +2. +2. +2. Oxygen का जो oxidation number, it can be -1, it can be -half, it can be -2, it can be +1, and it can be +2. Oxygen can have a number of oxidation states. Okay, what about O2F2? मैम Oxygen +half होगा. +1. ऑक्सीजन का फॉर्मूला यूज करो स्टार्टिंग में. व्हाट अबाउट द फ्लोरीन? मैम -1. -1. Fluorine always -1. Okay, 2x is equal to +2. What is x? 1. +1. किसने बोला था हाफ? मैम एक बार सेकंड वाला फिर से बता दो. CO2 का. बेटा CO2 को आप सिंपली याद कर लो कार्बन डाइऑक्साइड. डाइऑक्साइड का क्या मतलब है? सिंपल ऑक्साइड आयन है. ऑक्साइड का मतलब O2-. जनरली ऑक्सीजन का -2 ही होता है, एक्सेप्ट व्हेन इट इज कंबाइनिंग विद फ्लोरीन. प्लस ऑक्सीडेशन का नंबर कब होता है? विद फ्लोरीन. बिकॉज फ्लोरीन सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है. So whenever oxygen is combining with fluorine, then oxygen can show +1 and +2. Is that quite clear? अच्छा, -1 और -2 ये कब होता है? पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड में. तो जनरली ऑक्सीजन का होता है -2. जनरली ऑक्सीजन का होता है -2. ठीक है. अब कार्बन डाइऑक्साइड तो सिंपल कंपाउंड है, ये कोई पेरोक्साइड नहीं है. आई एम सिंपली सेइंग इट इज कार्बन डाइऑक्साइड.
कार्बन इज कंबाइनिंग विद 2 ऑक्सीजन, और कार्बन का अगर आप देखोगे कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 मींस 2 and 4, ये होता है कार्बन का। तो कार्बन का ऑक्सीजन, कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 4, तो कार्बन का हो गया +4। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, आउट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का आएगा माइनस और कार्बन का आएगा पॉजिटिव, और कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कार्बन का हो गया +4 और एक ऑक्सीजन का हो गया -2। यस और नो? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, या आप इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो कि एकदम मैंने बीच में सिंपल एग्जांपल डाल दिया जो आपका 9th 10th का था along with the cases of class 11th. Okay, next one. If I am O2 taking is KO2. पोटेशियम का तो होगा +1 +1 -1 is equal to 0. So what is equal to X? -1/2. -1/2. In this case, the oxidation number of oxygen is -half. Is it okay? Yes, ma'am. Okay. Now I am without any rules. I am taking more examples. Now question in the form of a question. We will be continuing as थोड़े simple examples कराऊंगी. So once you are thorough with the questions that are being done in the class, then we can take the complicated examples. Okay. Question is find oxidation number of underlying atom. I am taking simple examples now. Okay. Just keep in mind what is the simple generally oxidation number of oxygen. Generally -2. -2 केवल पेरोक्साइड और वो मेटल्स के साथ बनते हैं, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड जैसे एल्कली मेटल्स के साथ बनते हैं, उस केस में चेंज हो सकते हैं और विद फ्लोरीन के साथ पॉजिटिव हो सकते हैं, बट जनरली ऑक्सीजन का होता है -2 इन मोस्ट ऑफ द केसेस, मोस्टली ऑक्सीजन इज द -2. ओके, नाउ फर्स्ट केस SO2, आपको सल्फर का निकालना है. अगर मैंने अंडरलाइन एटम SO2 कर दिया यानी ऑक्सीजन नॉर्मल है, what will be the oxidation number of sulfur? +4 Plus अंडरलाइन एटम, ठीक है. सल्फर का हो गया +4 क्यों? X प्लस 2 ऑक्सीजन का हो गया -1 -2 is equal to 0, so X is equal to +4. Okay, what is the oxidation number of oxygen in ozone? 0. If element है, उसमें कोई और एटम्स तो है ही नहीं, it is 0. Now if I am taking is the oxidation number of iron. Iron में उसका चार्ज होता है, एक ही एटम है, Fe is an atom और +3. it is +3. If I am taking is Cu2 plus, ये भी iron है +2. +2. Okay, next one. If I have to calculate the oxidation number of sulfur in SO4 2-, use the formula. Sulfur का हो गया X plus how many oxygen? एक मिनट बेटा, फॉर्मूला यूज करो, डोंट हरी, डोंट डू इन अ हरी. सल्फर का हो गया X, हाउ मेनी ऑक्सीजन 4. व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम? -2. जनरली -2. ठीक है. और अगर मेरे को ऑक्सीजन का नहीं निकाला, सल्फर का निकालना है, तो ऑक्सीजन का मेरे को -2 भी लेके जाना पड़ेगा. इज इक्वल टू मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज है, व्हाट इज द चार्ज? -2. -2. यहाँ पर हम 0 नहीं लिख रहे, क्योंकि अगर मैंने सपोज मैंने SO2 लिया होता तो यहाँ पर तो मैंने इज इक्वल टू 0 लिख दिया था. व्हाई? क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, तो चार्ज मैंने क्या लिया 0. बट इन दिस केस देयर इज द चार्ज, एंड व्हाट इज दैट चार्ज? -2. ठीक है, तो X is equal to -2 plus 8 which is equal to +6. तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है +6. Is the point clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Last, I am taking is Cl
2O3. You have to find out the oxidation number of chlorine. Do the method. +3. Ma'am, 3. You can 3. start plus 3. Okay, 2x. Chlorine का निकालना है ना, अंदर 2x plus 3. Oxygen का हो गया -2 is equal to 0. So 2x is equal to -6. X is equal to ये plus 6. +6. -3. ठीक है, क्लोरीन का कितना आ गया +3. Is the point clear? So with this, I have told you we have done the simple oxidation numbers. In the next class, we will be taking more. Which is exceptional cases of all these we will be taking in the next class. According to NCERT only, whatever they have told. Okay. Now, similarly, if I am taking it. Okay, next question. Write in stock notation. Now, what is the stock notation? I am explaining with the help of a question only. Write in stock notation. Okay, all the rules are being applied here. FeO. First example is FeO. ये बस लिखने का इसमें कुछ है नहीं टॉपिक FeO. What is the oxidation number of oxygen? -1. Ma'am, +2. ऑक्सीजन का क्या होता है हमेशा -2. -2. केवल एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ दो, ये आपके सारे नॉर्मल केसेस हैं. आपको यहाँ पर ऑक्सीजन का नहीं निकालना. तो अगर हमें ऑक्सीजन का नहीं निकालना होता तो जनरल ऑक्सीजन का कितना होता है -2. पेरोक्साइड्स को आपको रिकॉग्नाइज करना होना चाहिए. H2O2 या एल्कीन मेटल्स के साथ बनते हैं. Peroxides and superoxides are generally formed by group 1 elements and hydrogen. बाकी elements generally they are not forming the peroxide generally. Oxygen का हो गया -2. What about iron +2? I can call it as iron. Bracket में iron का oxidation number 2 oxide. This is the stock notation. Iron 2 oxide. Now next example, if I am taking is Fe2O3. Okay, let me ask a particular student only. Yes, Kanika and Kanishka. What is the oxidation number of iron here? Oxygen that we are taking is -2. What is the oxidation number of iron? Yes. Ma'am, Only these students, Kanika and Kalika. Say yes, ma'am. yes. बोलो. Ma'am, -3/2. समझ में आया मुझे? आयरन का कितने? Ma'am, -3/2. कैसे? Ma'am, How? 2x. मेरे कैलकुलेशन मैम आयरन का +3 आ रहा है. +3 आ रहा है मैम. यस मैम मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से मैम +3 आ रहा है. आयरन का एक ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑफ अ सिंगल आयरन एटम. देयर आर 2 आयरन एटम्स. तो एक आयरन का मैंने ले लिया x. तो 2x + 3. ऑक्सीजन का हो गया -2 इज इक्वल टू 0. तो 2x इज इक्वल टू +6. तो व्हाट इज x? +3. Ma'am, iron 3 oxide. Iron 3 oxide. ठीक है? Okay. So this time when I am writing the oxidation number in Romans in brackets, it is called as stock rotation. Okay. Now if I am taking is SnO2. SnO2. Akshita, what is the oxidation number of Sn means still? Oxygen का -2. No exception in the case of oxygen. Yes, ma'am, telling. हाँ. SnO2. Sn means tin.
SN is the symbol of tin. Ma'am, +4. फोर को रोमन्स में लिखना है टिन 4 ऑक्साइड. ठीक है, इसका -2, इसका हो गया +4, so this is tin 4 oxide. Is it okay? Yes, ma'am. So I have told you what is the meaning of stock notation and how to calculate the oxidation number of simple molecules, simple atoms. ठीक है, और ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर बाद में कराओगे, पहले इन जितने एग्जांपल्स कराए हैं जस्ट गो थ्रू द एग्जांपल. नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक इज redox reaction and its types. ठीक है, 11th B, please tell Aishwarya ma'am, I have started from this topic number 8.3. Okay, I have started from topic number 8.3. Before that, Aishwarya ma'am will take in the tomorrow. Okay, now what I am taking is a redox reaction and its type. Redox reaction and its types. Now, in that type, what is the meaning of a redox reaction? A definition is a redox reaction is the one. Case 11 say what is a redox reaction? Vanshika, what is a redox reaction? Akansha, what is a redox reaction? 11th A. Reduction of O2 or addition of H2. Yes, or Ma'am, when redox. reduction and oxidation takes place on the same time, simultaneously. In which both oxidation, I have told you, oxidation means addition of oxygen, loss of electrons, loss of hydrogen or increase in oxidation number. ठीक है, हमें बेटर है हम ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर करें. In which both oxidation and reduction occur simultaneously. ठीक है, and I have told you in the case of oxidation means increase in oxidation number, reduction means decrease in oxidation number. Generally क्योंकि सब में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टर्म्स में देखना इट्स डिफिकल्ट. So generally when we are doing for class 11th and 12th, generally we take oxidation and reduction in terms of oxidation number. Oxidation number means increase in oxidation number, reduction means decrease in oxidation number. So these type of reactions are called as redox reaction. Now what we are going to do are the types. First type of redox reaction is a combination reaction. Now combination reaction means, what is the meaning of a combination reaction? It's a reaction in which two or more substances combine to give a new substance. Simple substance. Suppose मैंने simple example ले लिया, A plus B gives AB. It is a combination reaction. When two elements or compounds, they can be compounds also, combine to form a single substance. That type of reactions are called as combination reactions. When two elements or compounds, they combine to form a single substance. Okay. Now, if I am taking this carbon plus oxygen, is carbon dioxide. Is it a combination reaction? Yes or no? Yes, ma'am. Yes. Yes. Okay. Now, can you tell me, is this combination, is this a combination reaction? All of us know. Is it a redox reaction also? How to see? Generally, आप ये बोल सकते हैं carbon is gaining oxygen means oxidation हो रही है. But generally in class 11th, let's make use of the concept of oxidation number. What is the oxidation number of an element which consists of same type of atoms?
Zero. कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है 0. What about the oxidation number of oxygen? Again 0. Minus. ऑक्सीजन का 0. Yes or no? कोई चार्ज है ऊपर, सेम टाइप ऑफ एटम्स ही है ना बेटा, ये आयन तो नहीं है ना. डोंट कंफ्यूज इट विद पेरोक्साइड आयन, वो तो आयन होता है, ये तो सेम एटम्स है. दोनों ऑक्सीजन एटम्स है. इट इज अ एलिमेंट. ऑक्सीजन इन नेचर एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ O2. कोई भी चार्ज नहीं है. ठीक है, तो ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0. एनी डाउट है? Ma'am, can you tell this once again? अच्छा चलो देखते हैं. O2 का मेरे को निकालना है. हमारा फॉर्मूला कितना? 2. एक ऑक्सीजन का मैंने ले लिया X इज इक्वल टू 0. 0. मेरे को एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है. तो लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू X. तो 2X इज इक्वल टू 0. तो व्हाट इज X? 0. इसमें कोई चार्ज तो है ही नहीं ना. इट इज सिंपली O2 हैविंग नो चार्ज. ये आपका ऐसे नहीं है. अगर मेरे को O2 2 माइनस में निकालना होता, अगर मेरे को ये गिवन होता तब मैं निकालती 2X इज इक्वल टू -2, तो X इज इक्वल टू -1. लेकिन यहाँ पर तो कोई भी चार्ज नहीं है, तो 2X इज इक्वल टू 0. तो X का क्या हो गया? ऑक्सीजन का भी कितना हो गया? 0. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now what is the oxidation number of carbon and oxygen in CO2? CO2 में देखो, CO2 means कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्साइड आयन होते हैं O2 माइनस. कंपाउंड है ये. कंपाउंड में ऑक्सीजन का 0 नहीं होगा. इट विल बी सर्टेन चार्ज. और जनरली ऑक्सीजन का क्या होता है? Two. जनरली इट इज -2. ठीक है, पेरोक्साइड वगैरह नहीं है. पेरोक्साइड के एग्जांपल्स मैं आपको सारे बता चुकी हूँ. हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड एंड सो ऑन. पेरोक्साइड्स आर जनरली या तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होते हैं और एल्कली मेटल्स दे फॉर्म पेरोक्साइड. कार्बन इज अ नॉन मेटल. तो जनरली कभी भी ऑक्सीजन एक नॉन मेटल के साथ है तो ऑक्सीजन का क्या चार्ज होगा? -2. तो व्हाट इज द चार्ज ऑन कार्बन? Plus 4. Positive 4. +4. ठीक है, तो आई हैव कैलकुलेटेड द ऑक्सीडेशन नंबर. अच्छा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है? What is the meaning of oxidation? Means increase in oxidation number. Oxidation means increase in oxidation number. तो ऑक्सीडेशन किसकी हुई है? कार्बन की. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Increase in oxidation number. Increase in oxidation number means oxidation. अच्छा, ऑक्सीजन की क्या हुई है? Reduction. Reduction. 0 इसमें कन्वर्ट हो गया. ऑक्सीजन इज कन्वर्टिंग फ्रॉम 0 to -2. यानी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मींस रिडक्शन. यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है, ऑक्सीजन का हुआ है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर्स मींस रिडक्शन. तो ऑक्सीजन की क्या हुआ? रिडक्शन. तो इज दिस अ रिडॉक्स रिएक्शन? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. So this is a redox. Yeah, this combination reaction है तो combination ही ना. This combination Yes, ma'am. reaction is a redox reaction. Yes or no? Combination ma'am. reaction. Meaning of combination: when two substances combine to form a new substance, single substance. तो ये combination तो है ही, but this is also a redox reaction. Okay, let's take one more example, and you have to tell whether that is a redox or not. The first example I have taken this one. Second example, N2 plus H2 gives ammonia. I am taking very common examples. N2 plus 3H2 gives 2 ammonia. What is the oxidation number of nitrogen? 0. 0. Element है या compound है hydrogen? It is not combining with anything. 0 हो गया ना. It consists of same type of atoms. केवल hydrogen atoms ही तो है. From 0. 0. Hydrogen. What about the
oxidation number of hydrogen in ammonia. Hydrogen is combining with nitrogen, that is a non-metal. +3. +1. +3. Hydrogen with non-metals is hydrogen को बताओ बस. +1. +1. Point for the rules. Whenever hydrogen is combining with non-metals, so hydrogen का होगा +1. What about the number of nitrogen? ऐसे निकाल सकते हैं x नाइट्रोजन का ले लिया x +3 हाइड्रोजन का +1 is equal to 0 -3 yes or no? Yes, ma'am. So is this a redox reaction? Is this combination reaction a redox reaction? Yes, ma'am. Yes. यहाँ पर नाइट्रोजन -3 this reduction decrease in oxidation number. ठीक है ना नाइट्रोजन का डिक्रीज हुआ 0 हाइड्रोजन का इंक्रीज मींस ऑक्सीडेशन. Oxidation now. So this combination reaction is a redox reaction. Okay. Now I am taking a third example. Again, identify. Let me take the example of the book only. Okay. All of you know this reaction. Calcium oxide plus carbon dioxide gives calcium carbonate. Is this a redox reaction, Pragya? Is this a redox reaction, Pragya or Rishabh? Is this a combination reaction? First step, is this a combination reaction? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Combination में दो compound combine होकर single compound बना. Product single आना चाहिए. So this is a combination reaction. Now, is this a redox reaction? Is this combination reaction a redox reaction? Let's find the oxidation number. Okay. Now let me ask the particular students. All of you calculate the oxidation number fast, then I will answer. Yes, Rohit. Rohit and Rohan. Find the oxidation number of calcium. Rohit. Rohan, आप कार्बन और ऑक्सीजन का बताओगे. Yes, कैल्शियम का बताओ. और ऑक्सीजन का. Rohit and Rohan, are you present? Say yes, ma'am. Yes, ma'am, I am present. क्या था student? मैम कार्बन का +4, ऑक्सीजन का -2. मैम ये नो पॉसिबल. आप ही बोलो. कैल्शियम और ऑक्सीजन का. कैल्शियम का +2, ऑक्सीजन का -2. Yes, calcium का +2. Oxygen is generally -2. Okay. Now, can you tell me in the case of calcium carbonate, what is the oxidation number of oxygen? Calcium का तो alkali metal है +2. बताया था आपको. Alkali or alkaline metal. Calcium is a group 2 element that is alkaline earth metal. इसका तो +2 होगा. What about oxygen? -2 ही रहेगा. -2. Generally it is -2 only. What about that of carbon? I'm +4. +4. You निकाल भी सकते हो. अगर मेरे को कार्बन का निकालना है, कैल्शियम का हो गया +2 +X 3 ऑक्सीजन. एक का हो गया -2 इज इक्वल टू 0. ठीक है ना. इसका हो गया +2 प्लस कार्बन का मैंने ले लिया x +3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0. तो x यहाँ पे हो गया 2 और -6 मीन्स -4 इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू +4. Okay. Now this is a combination reaction. But now is this a redox reaction? No, ma'am. No, ma'am. क्योंकि कैल्शियम का +2 था, +2 से +2 ही रहा.
कार्बन का +4 था, +4 ऑक्सीजन, not a redox reaction. So it means that, like this example was a combination reaction, but it was a redox reaction. First example. Second was again a combination, but it was a redox. Third is again a combination, but it is not a redox. Yes or no? Yes, ma'am. Yes. So it means that मैंने आपको combination का meaning समझ आ गया. When two compounds or two substances combine to form a single substance. So what does it mean? Are all the combination reactions are redox reactions? No. It No. means that all combination reactions are not redox reaction. This is an assertion. ये statement है. All combination reactions are not redox reactions. Now, what is the reason? Only those combination reactions in which one of the reactant is an element are redox. This can be in the form of a reason assertion. What type of combination reactions are redox reaction? Only those combination reactions in which one of the reactant is an element. जैसे इसमें कोई भी एक reactant element होना चाहिए. इसमें तो दोनों reactants elements है, so this will be a redox. इसमें क्या कोई element है? Calcium oxide is an element or a compound? Compound. Carbon dioxide is an element or a compound? Compound. हमारी कंडीशन है कि redox reaction means there is an increase or decrease. और ये कब होता है? अगर one of the reactant is an element. This point you have to remember. Only those redox reactions, only those combination reactions in which the one of the reactant, at least one of the reactant, at least, दोनों भी हो सकते हैं, but anyway one of the reactant should be an element. Okay, without doing the equation, अब बताओ, will this reaction be a redox? कुछ भी calculation मत करो, पहले simply type. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Let me balance it. Yes, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या है मेरा? Element. तो ये, so this reaction is a redox reaction. अच्छा, let's take one more example. Without doing anything. This is a redox reaction now. This reaction is redox. Yes, ma'am. Yes. Yes. Question is this a redox? Combination तो है ही. Two compounds are combining to form a single compound. It is a combination. Yes or no? It is a combination reaction. Two substances are combining to form a single substance, and it is a redox also. Why? क्योंकि हम देख रहे हैं ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट. अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालने का मन है, मैं डायरेक्ट देख सकती हूँ कॉम्बिनेशन है, लेकिन वन ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी एलिमेंट, सो दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन. अगर आपको इसको ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर देखना है, तब भी देख सकते हो. वाटर प्लस O2, व्हाट इज H2O2? ये तो पता होना चाहिए. हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, यहाँ पर ऑक्सीजन का 0, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -1. देख लो ऑक्सीडेशन नंबर. और एनी डाउट? आर द ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर? हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन क्या है मेरा? नॉन मैटर. Whenever hydrogen is combining with a non-metal, हाइड्रोजन का हो गया +1 और ऑक्सीजन पेरोक्साइड है तो -1. O2 is a element 0, हाइड्रोजन का +1 होगा तो 2, हाइड्रोजन का +2, ऑक्सीजन का -2. किसकी हुई ऑक्सीडेशन?
किसकी हुई है ऑक्सीडेशन? इंक्रीज किसका हुआ है? Oxygen. ऑक्सीजन का ही इंक्रीज हुआ है। डिक्रीज किसका Ma'am, हुआ है? minus माइनस वन की डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन, Minus 2 से plus 1. यानी इसकी हो गई रिडक्शन, और ऑक्सीजन का ही इंक्रीज हुआ है। इट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम -2 टू -1। यस और नो? ऑक्सीजन का ही देखो चेंज हुआ है। एक ऑक्सीजन का यहाँ पर था -2, यहाँ था 0, यहाँ पर -1 है, तो 0 से -1 यानी डिक्रीज हो गया, रिडक्शन। -2 से -1 यानी इंक्रीज हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब बाकी आपके फटाफट हो जाएंगे, फर्स्ट में ही टाइम लगना था। फर्स्ट वन आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, सेकंड टाइप, चलो इसी में कराती हूँ आगे। सेकंड इज decomposition reaction. First type of redox reactions we have done in the combination. First one is combination. Second is the decomposition. What is the meaning of a decomposition reaction? Ma'am, decomposition reaction means breaking single product into one or more than one reactant. Yes. A single substance is broken into 2 or more simple products. ठीक है, अच्छा, a decomposition can be a redox, same condition है। A decomposition is a just opposite. We can see कि combination में combine होके single बना, decomposition में उल्टा हो जाएगा। A decomposition reaction will be a redox only if one of the products is the element. Only if one of the products is the element. In that case, a decomposition reaction will be a redox reaction. Okay. Now let's take the example, and you have to identify question. Which of the following is redox? Okay. First one. Is this a redox? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes. हमने सिंपल पहले कंडीशन देख ली कि मेरा मैग्नीशियम भी एलिमेंट, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, तो दिस इज अ रिडॉक्स। लेट्स चेक व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीशियम +2, ऑक्सीजन -2, यहाँ पर हो गया 0 0, तो ये हो गया डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर हो गया इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, सेकंड वन, Yes, ma'am, it's a redox reaction. Yes, ma'am. There's a redox reaction. ओके, इट्स अ रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है मेरा एलिमेंट। ठीक है, ओके, नाउ आई एम आस्किंग द क्वेश्चन। Rishabh, are you present? Any of the Rishabh, are you present? Say yes or no, Parth? Yes. Okay. Can you tell me what is the oxidation number of potassium, chlorine, and oxygen in KClO3? Potassium is a alkali metal. इसका fixed होता है। Ma'am, -1. Alkali metal का क्या होगा? Plus. Potassium can lose 1 electron. Atomic number 19, 2881. What is the oxidation number of potassium? Alkali metals always. Anyone else?
Ma'am, Plus one. positive one. Ma'am, plus Plus one. one. Plus 1. Plus one. Oxygen -2. What is the oxidation number of chlorine? 5. 5. 5. Plus 5. ठीक है ना, x plus 3 ऑक्सीजन का हो गया -2 प्लस x क्लोरीन का इज इक्वल टू 0, तो x सॉरी हो गया 1. ठीक है, तो इसका हो गया +5. इज इट ओके? तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज +5. व्हाट अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन है? 0. 0. Alkali metal is +1. What about that of chlorine? Minus 1. -1. किसी का हुआ है डिक्रीज? Decrease. डिक्रीज See. Oh. Ma'am, chlorine is decreased. Chlorine. और इंक्रीज किसका हुआ है? Oxygen. ठीक है, तो इज दिस अ रेडॉक्स? Yes, ma'am. ठीक है, तो कंडीशन आपको आइडेंटिफाई होनी चाहिए. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल. ओके, सो यू कैन इजीली फाइंड आउट. अच्छा, ये वाला तो एग्जांपल आपको पता ही है. इज दिस अ रेडॉक्स? No, ma'am. No, ma'am. इज इट अ डिकम्पोजिशन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपको आगे भी जो टॉपिक्स है ना, ऑक्सीडेशन नंबर के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है चैप्टर. तो जिनको अभी डाउट है, दे गो थ्रू द ऑक्सीडेशन नंबर प्रॉपर्ली. Ma'am, oxidation number fraction में कैसे हो सकता है? बेटा वो आएगा. मैंने अभी क्या कहा, अभी मैंने आपको केवल सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर्स कराए हैं. पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड में बताया था ना -1/2 होता है. Yes, ma'am, बताया था. Yes, ma'am. इट कैन बी इन फ्रैक्शंस. मैंने आपको कहा ही था कि आज मैंने एक्सेप्शनल केसेस नहीं कराए हैं, तो आई हैव टोल्ड ओनली द सिंपल वंस. कैन आई टेक वन मोर एग्जांपल? एक और टाइप करा दो, 5 मिनट्स लगेंगे पर. Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब डिस्प्लेसमेंट बाद में कराते हो, आपको करा दे कॉम्बिनेशन डीकम्पोजिशन, बिकॉज आई हैव टेकन एक्चुअली अ नंबर ऑफ केसेस हियर. सो लास्ट अभी आपको करा रही हूँ मैं डिस्प्रपोर्शनेशन. डिस्प्रपोर्शनेशन का मैं एक और एग्जांपल ले चुकी हूँ, इट इज रेलेवेंट होगी. Third type is disproportionation reaction. बस लास्ट एग्जांपल करा रही हूँ. Now disproportionation reaction in this same element is oxidized as well as reduced. This is a special type of redox reaction. These all are redox, are always redox. A disproportionation reaction is always redox. Like combination or decomposition with the condition C, one of the reactants or product should be an element. But a disproportionation reaction is always a redox reaction in which the same element is oxidized as well as reduced. One of the example I have already taken is H2O2. इसका मैंने रिवर्स में लिया था, so I am taking it like this. What is the oxidation number of oxygen here? 0. Number +1. This is simple water. Water में मालूम है हाइड्रोजन के ऊपर +1 होता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 होते हैं. What is this? H2O2 क्या होता है? इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली. हाइड्रोजन पेरोक्साइड. तो होता है +1, इसमें Ma'am, -1. +1 -1. अच्छा, अब इसमें ऑक्सीजन की क्या हुई है? -1 से -2. Ma'am, decrease. Decrease in oxidation number means reduction.
रिडक्शन मैम। 1 से ही 0 भी हुआ है यानी इंक्रीज हुआ है। मैम ऑक्सीडेशन। अच्छा क्या ये डिफरेंट एलिमेंट्स क्यों है, सेम एलिमेंट क्यों है? सेम एलिमेंट्स मैम। Same element. Here, oxygen is both is showing both increase and decrease in oxidation number. So what is this type of reaction? So this type of reaction in which the same element is oxidized as well as reduced, they are called as disproportionation reaction. Is it okay? One more example, last example I am taking for disproportionation. If I am taking this case, Ma'am, have you written hydrogen peroxide? yes, hydrogen peroxide. Okay, last example of disproportionation, Cl2 plus 2OH minus gives ClO minus plus Cl minus plus water. Now, what is the meaning of this one? What is the oxidation number of chlorine element? Element है ना Cl2, कोई और atom तो नहीं है? 0. 0. Himanshu, what is the oxidation number of oxygen here? Generally OH minus. ऑक्सीजन का कितना होता है? ये हाइड्रोजन का बता दो. Whenever hydrogen is combining with a non-metal. +1. That's one. What about the oxidation number of oxygen? -2. -2. ठीक है, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट भी कर दिया. ऑक्सीजन का मैंने x ले लिया, हाइड्रोजन का मेरे को मालूम है +1, ओवरऑल चार्ज है -1. तो ये पहले वाले 2 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता. ठीक है, ये तो बैलेंसिंग के लिए. तो x इज इक्वल टू -2. ओके, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर? सबको मालूम है? यस और नो? वाटर में हाइड्रोजन इज +1 और ऑक्सीजन -2. व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl माइनस? -1. -1. एक एलिमेंट है, उसके ऊपर जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है. ओके, व्हाट अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन ClO माइनस? क्लोरीन का निकालना है, ऑक्सीजन का -2 है. बोलो. क्लोरीन हो गया x ऑक्सीजन का -1 is equal to -1. x is equal to -1 plus 2 which is equal to +1. तो क्लोरीन का है +1, ऑक्सीजन का है -2. मैंने कहा जनरली ऑक्सीजन का -2 ही होता है जनरली. और पेरोक्साइड को आप रिकॉग्नाइज कर सकते, जैसे H2O आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, वाटर नहीं है, इट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड. सो आई हैव कैलकुलेटेड द ऑक्सीडेशन नंबर. नाउ व्हिच एलिमेंट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड? किसका इंक्रीज हुआ है? Chlorine. Chlorine. Increase means oxidation. ऑक्सीजन का देखो -2 है, यहाँ पर भी -2, हाइड्रोजन का +1, यहाँ पर भी +1. अच्छा, डिक्रीज किसका हुआ है? हुआ है किसी का डिक्रीज? Chlorine. क्लोरीन का ही डिक्रीज हुआ है. कैसे डिक्रीज हुआ है? फ्रॉम 0 to -1. Yes or no? Yes, ma'am. It means that is this a disproportionation reaction? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Proportionation reaction, is it a redox? Yes, ma'am. Yes, ma'am. A disproportionation reaction is always redox because its definition is same element is oxidized as well as reduced. Okay, I am just waiting for, I am just taking the attendance. Don't leave the class in between.
ऑल ऑफ यू रिवाइज दिस टॉपिक्स. इसके बिना आपको आगे चैप्टर बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस वगैरह बिल्कुल समझ नहीं आएगा. ओके, यू कैन ऑन लीव. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.